So welcome to Chemistry Academy, Fajandar High School and Junior College, Vahur. Now student, in previous lecture, we have discussed substitution reaction. What is nucleophilic substitution reaction? Why alkyl halide easily undergoes nucleophilic substitution reaction? Because in case of alkyl halide, the carbon, जिसको halogen attached है, वो carbon क्या रहेगा? Electrophilic center, positive charge carrying species. And it has greater tendency to react with a nucleophile, and that's why it easily undergoes nucleophilic substitution reaction. उसके बाद अपने डिस्कस किए थे क्या SN1 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, SN2 रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर. अब एक्चुअली SN1 मीन्स द रिएक्शन इन विच रेट ऑफ द रिएक्शन. अब रेट क्या पर डिपेंड्स करता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओनली वन स्पेसीज, वन मीन्स यूनिमोलिकुलर. एंड SN2 में क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू स्पेसीज. बाय मीन्स टू, सबस्ट्रेट एज वेल एज अ न्यूक्लियोफाइल. नाउ इन दिस लेक्चर, ये वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन. स्टूडेंट, लेट मी क्लियर वन पॉइंट. व्हाट इज मैकेनिज्म? मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि मैकेनिज्म किसको बोलते हैं. एक्चुअली मैकेनिज्म मतलब स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्शन इन प्रोग्रेस. स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्शन इन प्रोग्रेस. अब रिएक्शन इन प्रोग्रेस मीन्स हाउ रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, वेदर इट टेक प्लेस इन वन स्टेप और इट टेक प्लेस इन मोर देन वन स्टेप. अब वन स्टेप, मोर देन वन स्टेप, इसका मतलब रहता एनी इंटरमीडिएट इज फॉर्म और नॉट. नाउ इंटरमीडिएट आपने 11 में डिस्कस किए. कार्बोकेटायंस, कार्बन पॉजिटिव चार्ज, कार्बेनियन, कार्बन पर निगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल, कार्बन बियरिंग ऑड इलेक्ट्रॉन 1 3 5, कार्बीन, कार्बन बियरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इंटरमीडिएट बनेगा या नहीं? अगर इंटरमीडिएट बना, so this reaction is more than one step, and if no intermediate will form, reaction will be one step. Directly reactant will convert into product. Actually, if the rate depends upon concentration of two species, रिएक्टेंट में दो स्पेसीज है और दोनों भी रेट इन्फ्लुएंस करते हैं, दोनों पर रेट डिपेंड्स करता है, ऐसे केस में इंटरमीडिएट नहीं बनता. मींस डायरेक्टली रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. दैट इज कॉल्ड एज वन स्टेप रिएक्शन. कौन सा वन स्टेप रिएक्शन रहेगा? जिसमें दोनों फैक्टर्स, दोनों स्पेसीज रेट को इन्फ्लुएंस करेंगे, जिस पर दोनों स्पेसीज पर रेट डिपेंड्स रहेगा. एंड इफ रेट डिपेंड्स अपॉन ओनली वन स्पेसीज, in such cases a intermediate will form, and that is reaction will be two step reaction. So अगर ये मेरे सेंटेंस आपको समझ में आए क्या कौन सा रिएक्शन वन स्टेप रहेगा and which reaction will be two step reaction, so tell me, SN1 follow two step or one step? Definitely SN1 will follow two step reaction because rate depends upon concentration of only one species. SN2 follows one step reaction because rate depends upon concentration of two species. Okay, rate depends upon concentration of two species. Now all that matter we will discuss in today's lecture. पूरे मेरे points जो first 2.5 minutes में मैंने discuss किया हो, अपन वो black board पर, white board पर discuss करेंगे. So now my first point, substitution nucleophilic bimolecular reaction. That is called as SN2 reaction. Now methyl bromide, that is your primary alkyl halide, react with hydroxide ions, act as a nucleophile, it convert into methanol. In this case my leaving group is Br and incoming group, that is nucleophile, is OH. Okay, so Br it is replaced or substituted by OH, and that's why this reaction is called as a nucleophilic substitution reaction. Now it is found that only two species present in the reactant and both species influence the rate of the reaction. मतलब दोनों भी species पर rate depends है. So how to write kinetic expression? Rate proportional to concentration of substrate as well as a nucleophile. Proportional remove करो, equal and use constant.
that is K, proportionality constant, and this reaction is your bimolecular reaction. It follows second order kinetics. It follows the second order kinetics. And why it follows the second order kinetics? Because rate depends upon concentration of two species. Actually related to kinetics, rate, ये सब अपन डिस्कस करेंगे our next topic chemical kinetics. ओके, नाउ काइनेटिक्स का मतलब रहता है रेट, स्पीड और वेलोसिटी, और रेट मीनिंग्स द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिएक्शन. कितने टाइम में, कितने ड्यूरेशन में वो रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है. विच फैक्टर्स अफेक्ट्स द टाइम, विच फैक्टर्स अफेक्ट द रेट, that is called as your kinetics, that is called as your rate of reaction. Change in concentration of any one reactant or product per unit time, that is called as the rate of reaction. All this matter in detail we will discuss in chemical kinetics, very next topic. So here our concept is mechanism of substitution nucleophilic bimolecular reaction. अब अपन mechanism start करेंगे. Now see, as already we have discussed, rate depends upon two species, so this reaction will be one step reaction. Rate दोनों पर depends है. Both species influence the rate of the reaction. This implies that the reaction will be one step reaction, and if it is one step reaction means no intermediate will form. So in such cases bond breaking and bond making will take place simultaneously. Bond breaking and bond making. अब bond breaking मतलब कौन सा bond break होगा यहाँ पर? कार्बन Br, because Br is the living group, and bond making means the bond between carbon and OH. ये simultaneously होगा, एक ही स्टेप में दोनों bond break और bond बनेगा. Now see, this is your methyl bromide. See, CH3. Now I am using here stereo structure. Okay, now this one is your CH3Br. Now thick line front side, dotted line back side. It react with a nucleophile, that is hydroxide ions, okay, through a transition state. It convert into final product. Our final product is CH3OH, means only Br it is replaced by OH. Br it is replaced by OH. Now here Br is highly electronegative, belongs to halogen family. Your nucleophile is also electronegative. So if nucleophile and Br comes front, definitely there will be a repulsion. अगर दोनों एक दूसरे के सामने आ गए तो डेफिनेटली वहां पर क्या होगा? रिपल्शन. नाउ इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन, द न्यूक्लियोफाइल अटैक अ सब्स्टिट्यूटेड कार्बन. द न्यूक्लियोफाइल अटैक अ कार्बन अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन. मतलब ये जो OH है ये कार्बन से बॉन्ड बनाएगा अपोजिट साइड ऑफ Br. अब आपका Br राइट साइड में, तो OH कहां से बॉन्ड बनाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में. व्हाई? दैट आई विल शो यू. नाउ सी, दिस वन इज योर carbon undergoes substitution. Now OH form a bond. Form a bond के लिए मैंने word use किया attack. Okay, form a bond from opposite side of living group. अब मेरा living group Br right side में, तो OH कहां से bond बनाएगा? back side. और ये पूरे ग्रुप्स opposite हो जाएंगे like your umbrella. आपका umbrella का भी हवा चलती तो उल्टा कैसा होता है? फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला बोलते हैं इसको. तो ये टोटली जो आपके लेफ्ट साइड है, कार्बन के लेफ्ट साइड में, कहां चले जाएंगे? राइट हैंड साइड में. ओके, सो दिस इज द प्रोडक्ट. नाउ इट इज कॉल्ड एज फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला. क्या बोलते हैं इसको? फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाई द OH अटैक या फॉर्म अ बॉन्ड फ्रॉम अपोजिट साइड्स ऑफ लिविंग ग्रुप? क्यों OH अपोजिट साइड? Br के अपोजिट साइड, Br राइट में, यहां OH कहां आ रहा? लेफ्ट हैंड साइड में. टू अवॉइड द स्टेरिक रिपल्शन एज वेल एज टू अवॉइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. मीनिंग बताता हूं मैं. टू अवॉइड द स्टेरिक रिपल्शन एंड टू अवॉइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. नाउ Br इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, nucleophile is electronegative. If OH form a bond from front side, मतलब जो साइड में
लिविंग ग्रुप है, वो साइड से अगर OH ने बॉन्ड बनाया तो डेफिनेटली Br और OH में क्या होगा, रिपल्शन होगा। मींस OH एंड कार्बन का बॉन्ड बनेगा क्या, नो, एंड दैट्स व्हाई OH अटैक और फॉर्म अ बॉन्ड फ्रॉम अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप एंड दैट इज कॉल्ड एज टू अवॉइड द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। नाउ this reaction proceed through a transition state because we are saying bond breaking and bond making take place simultaneously. अब वो कैसा होता, see this one is your carbon undergoing substitution, okay, carbon undergoing substitution. Now these are the three hydrogen atoms, these are the three hydrogen atom. Now one is your Br, okay, second one is your OH. Now here the bond breaking and bond making it is represented by dotted line. अब ये dotted line का मतलब होता है partial bond, half bond, okay. Now Br will acquire half partial negative charge and OH will also acquire a partial negative charge. ये transition state indicates करता CBr bond break हो रहा है and COH bond बन रहा है. Bond breaking and bond making take place simultaneously to form a final product, and this is a mechanism of SN2 reaction. So in case of mechanism of SN2 reaction, the characteristic or we can say silent feature we have to discuss. What are the silent features of, what are the silent feature of SN2 reaction? Now in case of silent feature of SN2 reaction, first point, bond breaking and bond making, bond breaking and bond making take place simultaneously, मतलब एक ही स्टेप में बॉन्ड बनेगा, नो इंटरमीडिएट विल फॉर्म. सेकेंड उसका कैरेक्टरिस्टिक रहता बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अटैक मतलब लिविंग ग्रुप राइट में है तो आपका इनकमिंग ग्रुप कहां से आएगा, लेफ्ट से. अगर लिविंग ग्रुप लेफ्ट में रहता तो इनकमिंग ग्रुप कहां से आता, राइट से. तो इट इज कॉल्ड एज बैक साइड ऑफ न्यूक्लियोफाइल. एंड व्हाई न्यूक्लियोफाइल अटैक मतलब बॉन्ड बनाना, अटैक मतलब बॉन्ड बनाना फ्रॉम बैक साइड टू अवॉइड द स्टेरिक रिपल्शन ओवर क्लॉडिंग. स्टेरिक का मतलब होता है क्लॉडिंग, स्टेरिक रिपल्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन. देखिए दोनों के रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए बैक साइड का अटैक होता. थर्ड पॉइंट रहता, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक रहती है in transition state the bond breaking and bond making, मतलब living group Br and incoming group that is OH nucleophile attached to carbon through a partial bond. Transition state में living group and incoming group Br and OH attached to carbon through a partial bond that is dotted line. ये हो गया आपका थर्ड कैरेक्टरिस्टिक. नाउ फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांजिशन स्टेट कंटेन पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन. ट्रांजिशन स्टेट कंटेन पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन. अब पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन में हियर 1 2 3 4 5 मतलब ये कार्बन को कितने आइटम्स अटैच्ड है, 5 आइटम. दैट इज पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन इन विच 3 आर सिग्मा बॉन्ड. ये जो बॉन्ड है इन विच 3 आर सिग्मा बॉन्ड. ये बॉन्ड कौन से हो गए, सिग्मा बॉन्ड इन वन प्लेन. ये जो 3 हाइड्रोजन आइटम्स रहेंगे वो एक ही प्लेन में रहेंगे. एंड 2 आर पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड. 3 आर सिग्मा बॉन्ड एंड 2 आर पार्शियल कोवैलेंट बॉन्ड अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन. अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन. ये 3 हाइड्रोजन आइटम एक ही प्लेन में रहेंगे. और ये जो Br और OH है ये along a line perpendicular to the plane. क्या रहेंगे, along a line perpendicular to the plane. That is the fourth characteristic of your SN2 reaction. And fifth characteristic, now in this case the OH मतलब nucleophile attack from back side, it is known as 100% inversion in configuration. 100% inversion in कॉन्फ़िगरेशन. नाउ एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन मतलब अरेंजमेंट. कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या रहता है, अरेंजमेंट. अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम. ओके. नाउ इन्वर्जन मतलब उल्टा, अपोजिट. अब देखो
लिविंग ग्रुप Br राइट साइड में था, प्रोडक्ट में इनकमिंग ग्रुप OH कहां पर आया, लेफ्ट साइड में, एग्जैक्टली अपोजिट, दैट इज कॉल्ड एज 100% inversion उल्टा in configuration, and these are the 5 characteristic of SN2 reaction. पहला characteristic क्या आएगा, it is one step reaction in which bond breaking and bond making take place simultaneously. Second characteristic क्या आएगा, the backside attack of nucleophile to avoid the steric repulsion and electrostatic repulsion. Third point, in transition state, living group Br, incoming group nucleophile OH attached to carbon through a partial bond. Third characteristic, transition state contain penta-coordinate carbon which shows 3 sigma bond. उसको कितने sigma bond attached है, 3 in one plane and 2 partial covalent bond along a line perpendicular to the plane. And last characteristic क्या आएगा, क्या here backside attack of nucleophile, so there is 100% inversion in configuration, and this reaction is called as Weldon inversion. This reaction is called as Weldon inversion reaction. ये कौन सा रिएक्शन हो गया आपका, Weldon inversion reaction, that is your SN2 reaction. Weldon inversion or SN2 reaction, and this is the mechanism of SN2 reaction. One step reaction, no intermediate is formed, okay, directly bond breaking and making take place simultaneously, means directly reactant convert into product through a transition state. ट्रांजिशन स्टेट में अपने क्या शो किए, क्या बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग एक ही स्टेप में हो रहा, एंड दैट इज शोन बाय अ डॉटेड लाइन. दिस इज ऑल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन. सो methyl bromide प्राइमरी अल्किल halides react with nucleophile to form the methanol. Why backside attack? Why 100% inversion? What is the name of another name of this reaction? What is the mechanism of SN2 reaction? Note down all this point in your notebook. Write fast. Now our second mechanism, that is your substitution nucleophilic unimolecular. Now uni means one, and what is substitution nucleophilic unimolecular reaction? अभी अपने स्टडी किए पहले वीडियो लेक्चर में कि the reaction in which rate of reaction depends upon concentration of only one species. Rate of reaction depends upon concentration of only one species, and that reaction is called as unimolecular reaction. That is first order kinetics. Now tertiary butyl bromide react with hydroxide ions. Here my living group is Br and incoming group is OH. मतलब Br की जगह अपन क्या अटैच करेंगे, OH. Instead of Br attach there OH, tertiary butyl bromide convert into tertiary butyl alcohol, and in this reaction, in rate reaction, concentration of only one species is appear, and that is your substrate. मतलब rate depends upon concentration of only one species, and this reaction will be two-step reaction. Rate depends upon concentration of only one species, so ये reaction क्या हो जाएगा आपका, two-step reaction. अब two step reaction means definitely intermediate will form. Okay, अब कौन सा intermediate बनेगा, how it will form, that we will study in case of mechanism. Okay, so now start tertiary butyl bromide. See here, this one is your tertiary butyl bromide. Now my first step, okay, step number 1. Now this one is your tertiary butyl bromide. Okay, tertiary butyl bromide. Now in first step, the bond between tertiary carbon and Br, the bond between tertiary carbon and Br, this bond will break heterolytically. अब ये जो बॉन्ड है कार्बन का और Br का, ये कैसा ब्रेक होगा, हेटेरोलिटिकली. देखो वन बॉन्ड का मतलब रहता है 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन बॉन्ड का मतलब क्या रहता है
टू इलेक्ट्रॉन। अब जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता तो दो टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग रहती, एक तो होमोलिटिक ब्रेकिंग रहती और दूसरा ब्रेकिंग क्या रहता है, हेटेरोलिटिक। होमोलिटिक ब्रेकिंग में क्या होता है कि ये जो वन बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, जब वो ब्रेक होता दोनों स्पेसिस अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। मतलब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा एक इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, Br, एंड दूसरा इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, कार्बन, इन होमोलिटिक। लेकिन यहां कौन सा बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, हेटेरो। हेटेरोलिटिक में क्या होता है कि जब बॉन्ड ब्रेक होता बोथ इलेक्ट्रॉन टेकन बाय वन स्पेसिस, दोनों भी इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पेसिस ले लेता। और कौन सा स्पेसिस लेता, जो हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव रहता, एंड दैट ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज हेटेरोलिटिकली ब्रेकिंग। किसको बोलूंगा मैं, हेटेरोलिटिकली ब्रेकिंग। जब बॉन्ड ब्रेक होगा जो हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव स्पेसिस रहेगा वो दोनों भी इलेक्ट्रॉन ले लेगा। मतलब वन स्पेसिस विल डोनेट द इलेक्ट्रॉन, अनदर स्पेसिस विल एक्सेप्ट। अब कार्बन में और Br में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, Br। सो Br क्या करेगा, दोनों भी स्पेसिस ले लेगा। मींस हियर कार्बन बिकम पॉजिटिव एंड Br बिकम नेगेटिव। ओके, एंड दिस ब्रेकिंग इज कॉल्ड एज हेटेरोलिटिक ब्रेकिंग। नाउ सी here we can write this carbon. Okay, now to this carbon here the CH3 are attached. Sorry, now this one is your carbon attached there, CH3. ओके, एंड दिस कार्बन बिकम अ पॉजिटिव चार्ज। ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन ले लेगा, Br, एंड Br विल एक्वायर्ड अ नेगेटिव चार्ज। एंड इन दिस वे द इंटरमीडिएट विल फॉर्म। एंड कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा आपका, कार्बोकेटायन। सी कार्बन कैरिंग अ पॉजिटिव charge, a carbocation intermediate will form. Okay, now the same structure we can show like this also, same structure. Okay, now here this carbon carrying a positive charge and this is your carbocation, and this first step it is a reversible step and this step is a slow step. First step is a reversible step and this step is slow step. So what happened in SN1 first step, now first step reversible and slow step. In this step the bond between carbon and halogen break heterolytically. Carbon donates its electron and Br highly electronegative accept its electron to form a tertiary carbocation as a intermediate. Now in second step, now in case of second step which is a fast step, अब देखो क्या होता है सेकेंड स्टेप में, नाउ दिस कार्बोकेटायन फॉर्म अ बॉन्ड विद न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो कार्बोकेटायन है विच इज फॉर्म इन फर्स्ट स्टेप, अब ये कार्बोकेटायन से कौन बॉन्ड बनाएगा, न्यूक्लियोफाइल। एंड व्हाट इज माय न्यूक्लियोफाइल, OH माइनस टू गिव अ फाइनल प्रोडक्ट एंड फाइनल प्रोडक्ट इज योर मिथेनॉल। अब यहाँ पॉसिबिलिटीज क्या रहता, नाउ OH फॉर्म अ बॉन्ड फ्रॉम फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड, फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटायन बना हुआ है। नाउ राइट डायरेक्टली योर फाइनल प्रोडक्ट दैट इज योर टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। Your final product is tertiary butyl alcohol and second step is your fast step and this is a mechanism of SN1 reaction. SN1 reaction it is two step mechanism. See here, this one is your first step and this one is your second step. Now first step slow and reversible step and second step is a फास्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा CBr हेटेरोलिटिकली टू फॉर्म कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट, और फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो ये इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन से रिएक्ट करेगा और ये बनाएगा टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल एंड दिस इज योर SN1 रिएक्शन। नाउ साइलेंट फीचर आप लोग लिख सकते हैं, इट इज टू स्टेप रिएक्शन। नाउ हियर कार्बोकेटायन एज एन इंटरमीडिएट इज फॉर्म टर्शियरी कार्बोकेटायन, क्योंकि ये कार्बन टर्शियरी कार्बन है
So this is the most stable tertiary carbocation. Nucleophile form a bond with tertiary carbocation to give a final product. So this is all about SN1 and SN2 reaction. It depends on your practice. Practice it well. Whenever you are feeling difficulties, comments, we will try to solve it. Okay? मुझे personally contact करो. Definitely we will try to solve your difficulty. Now my last point, hardly 1 minute. What is the basic difference between SN1 and SN2 reaction? क्या है basic difference between SN1 and SN2? Now SN1 unimolecular. Rate depends upon concentration of one species. SN2, that is your bimolecular, rate depends upon concentration of two species. SN1 two-step reaction. SN2 one-step reaction. SN1 here intermediate tertiary carbocation intermediate is formed. SN2 no intermediate is formed. SN1 it may be 50% inversion or retention. SN2 it is 100% inversion, backside attack of nucleophile. Bond breaking, bond making take place simultaneously. Okay, so this is all about the mechanism of SN1 and SN2 reaction. Try to remember all points. Okay, thank you.